yes, no, maybe. If I am audible, loud and clear. Uh, okay, so I see here Atharv, um, Divyansh, Nagesh, Pranjal, Shikha, and Yadav, Akshay Yadav. Okay, so how many of you have attended the AARAMBH session before? So this is, if you are attending for the first time, write first. And if you are attending for second, third, or fourth time, this is the fourth session of AARAMBH. So mention that in the chat box. First, second, fourth, whatever. Yeah. Please mention that. Okay. So all of you are attending for the first time because this is the fourth session and there is some correlation to the previous sessions because we are building up. Divyansh, this is your fourth session. Good to see you, Divyansh. Thanks for joining in. Uh, Pranjal, this is your fourth session. Okay. Thanks, Pranjal, for joining in again. Uh, so those who are attending for the first session, uh, if you can just highlight your last education, qualification, and what are you doing currently? I just wanted to understand the crowd. And Divyansh and Pranjal, I think I would ask you to write down the learnings of AARAMBH session till now. Whatever comes to your mind, single word, double word, whatever comes to your mind. Please mention that in the chat box. Divyansh and Pranjal and all other people, those who are attending for the first time, please mention your last qualification and what are you doing currently. If you're not doing anything, mention that you're not doing anything and building your skill. If you're working somewhere, please mention that. So yeah, let's start. BCom working as an accountant. Okay, Nagesh, thanks. Pursuing MBA. Athar, which college you are doing an MBA and which year? You are in second year? Akshay, you are BCom LLB or you are so you have completed or you are pursuing? If you can highlight that, please. Shikha, okay, just completed BCom. Okay, fair point. I want Divyansh and Pranjal to write down the learnings till date. Okay, okay. So you, Divyansh mentioned something which I will explain anyway to all of you. Go ahead, Divyansh, keep writing, keep writing. There are many more things that we have learned. Keep writing. Pranjal, you can also write. Keep writing, please. So I'm here only just stopping my video. Just keep writing. I'm just giving you two types, 2-3 minutes more to express yourself. So which college you are doing MBA? I think I asked this to Atharv and I asked Akshay, आपने BCom LLB कर लिया है कि pursue कर रहे हो? And which year you are? So keep writing, guys. Keep writing.
Give me just 1 minute. Divyansh, I'm very happy that you're mentioning many things. आप लिखते रहिए, just give me 1 minute and we'll start. Yeah, yeah. Hmm. Divyansh, very nice. I'm very happy आपको वो 3 times तो नहीं था, but ठीक है. Microsoft buying LinkedIn 3 times नहीं, ज्यादा है, but ठीक है. But I'm very happy आपको काफी सारी चीजें याद है हमने जो 4 सेशंस में पढ़ी. Very nice. I'm very happy, Divyansh. So keep it up, Divyansh. I think हमारे main program में भी this is how we build the concepts, right? So guys, couple of things which those who are attending for the first time. Um, AARAMBH is a initiative by SkillEdge where I come every weekend, and we initially did in weekday also, but we got requests from most of the people that sir weekend mein rakhiye. And it's a free session where I talk about um, various aspects of finance in a simple language जो शायद कभी आप लोगों ने सोचा नहीं होगा. And the objective is there is a simulation game. So I got a chance to be taught by the world's best professors of finance because I did my education from #1 B school in the world in CR France. And उस सिमुलेशन गेम को, so वहां पे ना एक सिमुलेशन गेम खिलाया गया हमें जिससे फाइनेंस पूरा फाइनेंस समझ में आता है 8 से 9 घंटे में. द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस विच इज अमेजिंगली ब्यूटीफुल. वो अलग बात है, हमें ऐसा कभी पढ़ाया नहीं गया. वी हैव नेवर बीन टॉट लाइक दैट. We have been just taught by PPT. So MBA finance, we all know, it's just running a PPT, nothing else. And in BCom, we only understand accounting. And finance and accounting, nobody tells us there's a huge difference. In fact, finance starts where accounting ends. Anyway, coming back to the point, so ARAM is a session where I take every week in the weekend, and the purpose is to complete the simulation game. But to complete the game, there are some 6-7 hours of fundamental learning, some concepts, and various other things that we learn, and then we will initiate the game. I have experimented this game in IIMs. It's a very famous, uh, game in IIMs, and with SkillEdge. So this is done in ARAM, also in our regular program. In our regular program, this game is like very hit. More than 500 students have done this program and the game, and that is the best way they learn finance, which obviously most of the people have never experienced.
So this is ARAMBH. Okay, so it's a 1 hour of your life or 2 hours of your life in a weekend in a different zone altogether. Okay. Now, so before I pick up some points which will be new for most of them, which will be new for many of you, and some revision for Divyansh and Pranjal because they are doing it for the fourth time. They are coming in the session for the fourth time. Uh, so, see the purpose of our our program or is to help participants to achieve the dream of becoming a financial analyst. Now, in order to become financial analyst, there are three options. Either you do an MBA from a tier 1 college, which is IIM or the first 50 colleges of India. Then you will get a chance to interview as a financial analyst. And I will also explain what does an analyst do. Second way is you clear CFA. CFA level 1, 2 and 3. You invest 3 to 4 years and approximately 4 to 5 lakhs. Or third, you study for CA, Chartered Accountant. If you are not able to do any one of these three, which is what 90% of the students can't do, but you have an aspiration to become an analyst. As I was hearing from many of you, I want to be in Deloitte. Many of the students of mine have this dream of getting into Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse, and they are there. Right? How do I get into these companies as an analyst? If I am not being able to do any one of these three, then how do I go there? The answer to that is you have to do a program which gives you 360-degree learning. Then you have to join a company, work there for 2-3 years as an analyst, and then apply to these companies, JP Morgan, Goldman Sachs. You should be able to crack it. This is like a dream, and the dream has to work. The dream ke liye kaam karna hai, then there has to be a step-by-step process, and you have to have a mentor. It is like जो IT प्रोफेशनल में होते हैं वो बोलते हैं मैं कोडर हूं, मेरे को मांग कंपनीज में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, जो कोडिंग करते हैं, पर वो ऐसे नहीं जा सकते, राइट, अनलेस आप IIT वगैरह से नहीं हो. वहां जाने के लिए आपको 6-7 साल लगेंगे या 4-5 साल लगेंगे. पहले किसी प्रोडक्ट कंपनी में जाओ, प्रोडक्ट कंपनी में रगड़ो 3-4 साल, फिर पैरेलली अप्लाई करो. सेम लॉजिक, अगर आप फाइनेंस की दुनिया में हो और आपका ड्रीम है कि मेरे को एनालिस्ट बनना है इन कंपनीज में, जैसे मैंने कहा, तो पहले आपको एनालिस्ट के स्किल्स लेने पड़ेंगे, फिर एक कंपनी में काम करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन अप्लाई टू दीज कंपनीज. So it's a journey, and as a company, we work for your career. We don't work for your job. As you understand, career is a long process. Job is short term. You can do any job, right? Okay. So now, the financial analyst do? What does a financial analyst do? So financial analyst is a broad term. Within financial analyst, there are 10 to 12 roles and responsibilities. 10 to 12 roles and responsibilities within financial analyst, like equity analyst, investment analyst,
credit analyst, corporate finance analyst, capital market analyst. So 10 से 12 roles and responsibilities होते हैं within a broad term called financial analyst. So in our program, we teach all these 10, 12 different roles and responsibilities, all the skills related. Like there is a huge demand for equity analyst today, parallelly investment analyst. And there is logic to it. Today, Sensex is at 65,000. And there is this thought process that Sensex will reach 1 lakh in 2 years. So the demand for equity and investment is at a different level. Supply is not there because most of the people do not have the relevant skills. Because क्या होता है, आप थोड़ा सा फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख लो, कहीं से एनसीएफएम के सर्टिफिकेशन कर लो, उससे स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है. Because as an analyst, how do you know that you have learned those skills? Only when you are able to present them. So that's why in our program, we are the India's first program where you are being evaluated by your presentation. So a student does 13 to 14 presentations in front of the industry people to explain the concepts and the skills. Because to do presentation, आपको सीखना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी. And उसके बेसिस पे आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग वगैरह निकलती है. उसके बेसिस पे the corporate relation team helps you in giving the opportunities and so on so forth. Plus, you know, the students do come for AARAMBH sessions and whenever they get an opportunity to learn various things. जैसे आपने देखा दिव्यांश ने काफी अलग-अलग चीजें लिखी हैं. Many of you must have not heard of these things also. Right? So this is AARAMBH as overall. And बातों ही बातों में I have told you what does a financial analyst is all about in a company. One more thing I must tell you, and Divyansh have written down there. See, an analyst needs to have 3 to 4 skills. What are those? Number 1, you need to definitely have a bent of mind जहां पे numbers पसंद है. You need to love numbers. Whether you become an equity, investment, credit, corporate finance, you need to love numbers. Number 2, once you love numbers, you need to have the ability to identify the story behind the numbers. For example, there is a balance sheet of a company. You see the balance sheet and the profit and loss account, and you are like, year 1, sales, year 2, sales, year 3, sales, the cash position of the company using the cash flow statement, and you should know why it has happened, what it has happened. मतलब अगर सेल्स बढ़ा है तो क्यों, सेल्स घटा है तो क्यों, ये स्टोरी है. तो स्टोरी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन को खरीदा तो क्यों खरीदा और कितने में खरीदा. Amazon uses customers' money to run its business. How? There has to be a story. Why there is so much of hue and cry about Paichu when it is world's largest valued company? How does a technology-driven company works? And what all characteristics we need to keep in mind while we analyze a technology company or a technology-enabled company? They're two different things.
So these are the stories behind the numbers. Interesting, right? When we hear these things, they're very interesting, but we generally don't get into these because nobody has, taught us like that to build the stories. Third skill. Once you love the numbers, once you know the stories, do you know how to express the stories? Presentation. Do you know the golden rule of presentation, which is used by Steve Jobs and most of the great orators? What is the golden rule of presentation? And पता है तो क्या कभी आपने अप्लाई किया है in your written, which is non-verbal and verbal communication? अब होता क्या है? Nobody teaches us in our academics, and that's the problem. But that's how it is. And industry में कोई सिखाएगा नहीं, और यहीं पे वो डिफरेंशिएट क्रिएट हो जाता है. कोई टीयर 1 से आता है और कोई टीयर 2 से आता है, तो भैया टीयर 1 वाले को पता होता है. तीसरा पॉइंट है, यू शुड बी एबल टू express yourself. You should be able to express yourself. Verbal and non-verbal communication. That's a third skill. And the fourth skill, how many times you ask questions. If you don't have a habit of asking questions, please don't become an analyst. You should be ready to ask questions every moment in your life, professional and personal. The whys, the hows, the what. You should be like, I should ask questions. मुझे हर चीज में सवाल दिखना है और फिर ढूंढना पड़ेगा, स्टोरी ढूंढनी पड़ेगी. सो एनालिस्ट बन के अगर करियर में आगे बढ़ना है तो ये 4 स्किल पे काम करना पड़ेगा जो हमारे मेन प्रोग्राम में हम करते हैं. समझ में आया? इंटरेस्टिंग. Those who are joining for the first time, can I get a yes, no, maybe on the chat box, please? Can I get a yes, no, maybe on the chat box, please? So let me open up with you all. So because there are new people and some of them are old, let me gauge your understanding of any business. Because मेरा ऐसा मानना है कि हम जब फाइनेंस की दुनिया सोचते हैं ना, हम बस टर्म्स पढ़ते रह जाते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब, पर कभी किसी ने उसको बिजनेस के साथ जोड़ के नहीं बताया. इसीलिए we don't understand the stories behind those numbers. और इसीलिए हमें वो हमेशा, we always fear those numbers. डर बैठ जाता है क्योंकि कभी किसी ने उस पर्सपेक्टिव से समझाया नहीं, ना समझाने की कोशिश की. One more thing, in the main program or in the ARAMBH sessions, I'll ask a lot of questions. Because analyst, you need to keep asking questions, plus you need to express yourself. So ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे जो मन में आए बोलो, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म पहले कभी नहीं मिला, क्योंकि ना सवाल पूछने का मौका मिला और जवाब देने का मौका मिला ही नहीं, क्योंकि पीपीटी रन हो रही थी. I hope you understand what I'm saying, right? So don't worry about right wrong when you are expressing yourself. It's about expressing. The more you express, the more your brain is getting used to expressing, and your brain is, getting that fuel, getting that energy to express, which is important, right? चलो थोड़ा बिजनेस माइंडसेट देखता हूं मैं. आप लोग थोड़ा बेसिक बातें करते हैं आज की तारीख में, बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट सेशन on more basic terms of finance and stuff.
So tell me, think about what I'm asking now. So think about the businesses, right? So there is a concept of every business that we have today. टेक्नोलॉजी उसका एनेबलर है. वी कॉल इट टेक एनेबल्ड बिजनेसेस. टेक्नोलॉजी उसका एनेबलर है. एनेबलर मतलब टेक्नोलॉजी के यूज के थ्रू उस बिजनेस का मेन काम जो है वो हो रहा है. टेक्नोलॉजी एनेबल कर रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, सो एग्जाम्पल ऑफ टेक एनेबल्ड बिजनेसेस, फॉर एग्जाम्पल, राइट, इन माई ओपिनियन 70-80% of the businesses today are tech enabled. आप बोलोगे सर कैसे? So let's take the example of edtech. edtech मतलब टेक्नोलॉजी यूज करके एजुकेशन. मेन काम एजुकेशन है, पर वो इम्पार्ट कैसे हो रहा है? टेक्नोलॉजी यूज करके. ऑब्वियसली आप बैजू, वेदांतु, टॉपर, दिस इज edtech. स्किलेज भी आएगा उसमें. फर्क कितना है? स्किलेज edtech के अंदर एक और सेगमेंट है, इसको बोलते हैं स्किल टेक. क्योंकि हम एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के थ्रू स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं. एजुकेशन K-12 तक होता है. K-12 मतलब किंडर गार्डन से 12th स्टैंडर्ड तक. हम उसके बाद के स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग द स्किल. स्किल का मतलब क्या होता है? स्किल कैसे बिल्ड होता है? पहले आप नॉलेज देते हो, उस नॉलेज को आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है. सो नॉलेज मल्टीप्लाइड बाय प्रैक्टिस इज स्किल. सोच के देखना. सो आप में से किसी को, somebody of you maybe कह सकते हैं कि हमें पेंटिंग आती है या हमें डांसिंग आती है. वो कैसे बना आपका स्किल? आपने उसका नॉलेज लिया होगा कभी, फिर आपने उसको प्रैक्टिस किया. नॉलेज मल्टीप्लाइड बाय प्रैक्टिस इज इक्वल टू स्किल. So we are into skill development, where we will definitely give you the knowledge relevant to financial analyst and will make you practice that using presentation. यही मैंने कहा, we are India's first company to evaluate you through presentation. तो स्किल टेक भी एक एडटेक का पार्ट है. हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए, बात करने के लिए. टेक्नोलॉजी एनेबलर हो गया. ठीक. दूसरा, अब मैं पूछूंगा, मैंने आपको एक एग्जांपल देके मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव दिया, ठीक है, एक तरह का टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कंपनी का. दूसरा एक है फूड टेक. फूड टेक, राइट. फूड का बिजनेस यूजिंग टेक्नोलॉजी. क्या एग्जांपल दोगे आप? एग्जांपल दो कुछ कंपनीज का. गूगल वगैरह मत करना, जस्ट पुट एग्जांपल्स जो भी दिमाग में आता है. और नहीं पता तो बोलना डोंट नो. ठीक है. अक्षय, ज्ञान नहीं चाहिए. एग्जाम्पल पूछा है तो एग्जाम्पल लिखने का, कंपनी का नाम. ज्ञान नहीं चाहिए. मैंने फूड टेक बोला है अक्षय. फूड टेक. ओला एंड उबर इज मोबिलिटी टेक. मोबिलिटी टेक. समझ रहे हो आप क्या जवाब दे रहे हो? समझ रहे आ रहा है आपको? सो दैट इज मोबिलिटी टेक. हाँ. जोमैटो, स्विगी. आप लोग ये भी कह सकते थे, इसके अलावा एक चीज कह सकते थे, लेटेस्ट ट्रेंड है और ये पता होना चाहिए. फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है तो पता होनी चाहिए बिजनेसेस क्या चल रही. क्लाउड किचन सुना है आप लोगों ने? क्लाउड किचन कंपनी सुनी है? यस, नो. नो तो नो, यस तो यस. क्लाउड किचन इज अ टाइप ऑफ फूड टेक. उसके उसके कंपनीज के नाम पता होने चाहिए. But that using technology, you are building the business, food business. एक ही जगह से सब कुछ हो रहा है and then you are distributing it. Zomato, Swiggy, बिल्कुल. That comes under food tech. Food tech. एक होता है लॉजिटेक, लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी. एग्जाम्पल दो. लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी, लॉजिटेक. एग्जाम्पल
जल्दी जल्दी, नहीं पता तो नहीं पता। लॉजिटेक, लॉजिटेक। नॉन एग्जांपल्स दो पहले। तो फेडेक्स पूरी तरह से लॉजिटेक नहीं है। देयर इज अ component which is e-cart, you can say, to an extent. I agree. Have you heard of Zepto? Have you heard of Blinkit? Last Mile? सुना है? These are all Logitech डिलीवरी सुना है? डिलीवरी यूनिकॉर्न है। सुना है? हाँ ना, एंड यू हैव टू गिव आंसर्स क्विकली, राइट? नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, राइट? देयर इज अनदर सेट ऑफ टेक्नोलॉजी enabled companies. Insure Tech. Insure Tech. So Insure Tech examples दो। इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी एग्जांपल दो। पॉलिसी बाजार, ओके, दिव्यांश। एको, प्रांजल, बिल्कुल, लास्ट टाइम मैंने बात की थी इस बारे में। यस, एब्सोल्युटली, वेरी नाइस। इंश्योर टेक। और जब मैं दोबारा कह रहा हूं नहीं पता होगा ना, तो डोंट नो लिखना है। डोंट वेट फॉर अदर पीपल टू आंसर, ओके? टाटा एआईजी अब मूविंग इनटू द इंश्योर टेक जोन, या फेयर पॉइंट। पर इन कंपनीज के जब बाकी लोग लिख रहे हैं तो इन कंपनीज के नाम याद रखो या अपनी जगह पे लिख लो और गूगल करो, वैसे ही सीखोगे। सो टेक्नोलॉजी एनेबल्ड बिजनेसेस, मतलब आप समझ ही सकते हो, लगभग हर कंपनी आज या तो एडटेक है, या तो फूड टेक है, इंश्योर टेक है, लॉजिटेक है, मोबिलिटी टेक है, राइट? फिनटेक है। फिनटेक, पेटीएम, गूगल पे, सबके पास है, राइट? बड़ी सारी फिनटेक कंपनीज आ रही हैं। सो टेक्नोलॉजी एनेबल्ड बिजनेसेस में दो पैरामीटर्स होते हैं जो ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समझने के लिए एज एन एनालिस्ट। एक होता है सीएसी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ए कस्टमर, और एक होता है एलटीवी, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ए कस्टमर। दोबारा बोल रहा हूं, आप में से कुछ लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने नहीं सुना है। सो देखो, ये है प्रैक्टिकल थॉट्स, ये ज्ञान नहीं है। टेक्नोलॉजी एनेबल्ड बिजनेसेस क्या होते हैं समझ में आया, उसके एग्जांपल्स पता चले। टेक्नोलॉजी एनेबल्ड बिजनेसेस को एनालाइज कैसे करोगे, स्टोरी कैसे बनाओगे, कौन कैसा चल रहा है पता कैसे चलेगा? कुछ तो मेट्रिक्स होना चाहिए। चाय की दुकान कैसे चल रही है, टपरी, उसका मैट्रिक्स क्या है? उसका मैट्रिक्स ये है कितने कप्स वो बना रहा है चाय के, क्योंकि कितने कप्स वो बना रहा है तो उसमें उसकी कितनी खर्चे हो रहे हैं, और कितने कप्स बिक रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि वो चाय की दुकान कैसे चल रही है। कैरेक्टर, हमें मैट्रिक्स पता हो। एक स्टूडेंट हमारे यहाँ परफॉर्म कैसे कर रहा है, क्या मैट्रिक्स है, पता होना चाहिए। प्रेजेंटेशन कैसे दे रहा है, उसके नंबर, क्लासरूम अटेंडेंस एंड असाइनमेंट सबमिशन, ये हमारे तीन पैरामीटर्स हैं, अलग अलग वेटेज हैं, और उसके बेसिस पे ऑल इंडिया रैंकिंग होती है। सेम लॉजिक, राइट? बिजनेस मैट्रिक्स क्या है एक टेक्नोलॉजी एनेबल्ड बिजनेस का? काफी सारे क्राइटेरियाज हैं, हम सब में आएंगे धीरे धीरे, पर मैं आज पहला दिन है, बहुत बेसिक पे टच कर रहा हूं। दो चीजें हैं, दो पैरामीटर्स, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ए कस्टमर एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ए कस्टमर। कस्टमर समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि वो कंपनी किस तरह के कस्टमर्स को डील करती है, मतलब बी टू सी, बी टू बी, या डी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस एंड डायरेक्ट टू कंज्यूमर।
ये 3 टर्म्स हैं आज। सो अभी मैं आपको, तो आज पहला दिन है, थोड़ा हैवी नहीं करना है, पर्सपेक्टिव दिया मैंने, तो मैं आपको ये बोल के रख रहा हूं कि अगले सेशन में हम ये बात करेंगे कि लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ए कस्टमर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ए कस्टमर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तभी तो आप उनके पीछे की स्टोरी पता कर सकते हो कि इसका कॉस्ट हाई क्यों है, इसका लाइफ टाइम वैल्यू कम क्यों है, इसका ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। एंड कस्टमर जब हम बोलते हैं, पहले हम ये समझेंगे कि कोई कंपनी B2B में है, B2C में है या D2C में है। तो B2B में होने का क्या मतलब है, B2C में होने का क्या मतलब। B2C में रहने पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा होता है कि कम होता है B2B से। ये कुछ बेसिक बिजनेस नंबर्स, मेट्रिक्स और अंडरस्टैंडिंग है जो होना बहुत जरूरी है एज एन एनालिस्ट। एंड दिस इज कॉल्ड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, बिकॉज दिस इज नॉट ज्ञान, कोई पीपीटी रन करके ज्ञान नहीं दिया गया, बट दीज आर समथिंग दैट वी गेट यूज्ड टू एवरी डे, थिंक ओवर इट। सो गाइस, एलटीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीएससी कैसे कैलकुलेट करते हैं, B2B, B2C एंड D2C इंडस्ट्री में कैसे चीजें होती हैं विद एग्जांपल्स ऑफ द कंपनीज, ये हमारा अगला स्टेप है जो हम अगली बार आरंभ में लेंगे। तो और जानना है और समझना है और मजा आएगा अगले सेशन में। समझ में आई चीजें, मतलब एटलीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट समझ में आया कि नहीं? डिड यू ऑल एंजॉय? ठीक है, Indranil, over to you for some final words. But thank you so much, guys, for joining in. We'll connect soon. We're planning to have a session tomorrow only, and we'll see how it can be taken ahead. याद रखना, LTV, CSE, B2B, B2C, and D2C. We'll correlate that with the technology-enabled businesses. Yeah, cool. Indranil, you there? Yes, sir. Final words from your side. I take a leave, and thank you so much. Thank you, sir. Thank you for your time. So, students, we are planning your next session maybe tomorrow, और इस बार थोड़ा सा ज्यादा होगा। जैसे इस वीक में एक ही सेशन हुआ और आज का सेशन जस्ट एन इंट्रोडक्शन था, बट कमिंग वीक में 2 से 3 सेशन होंगे आरंभ के, 2 से 3। अगर कल रहा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ऑल इंडिया ग्रुप में, और अगर वीकेंड में होता है मंडे टू फ्राइडे के बीच में अगर 2 सेशंस होते हैं तो वो लेट इवनिंग होगा, थोड़ा लेट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वर्किंग होगा, कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, किसी का कोई काम होगा, तो लेट इवनिंग करेंगे थोड़ा सा 8 साढ़े 8 बजे के बाद, सो दैट हर कोई अटेंड कर पाए। क्योंकि अभी डीप ड्राइव होगा, मीन्स अभी एग्जैक्टली 2-3 सेशंस वीक में करके इसे खत्म किया जाएगा, क्योंकि वीक में एक सेशंस अगर होते हैं तो वो दिमाग से निकल जाएगा चीजें, ठीक है। और कंटिन्यू 2-2.5 घंटा अगर एक दिन में होता है तो वो भी काफी हेक्टिक हो जाता है। सो आपके ऑल इंडिया फाइनेंस कम्युनिटी के जो ग्रुप है उसमें आपको डिटेल्स आ जाएंगे। मोस्ट प्रोबब्ली वी आर प्लानिंग योर नेक्स्ट सेशन टुमारो ओनली। कल हमारे एक लाइव इंडक्शन भी है मेन प्रोडक्ट के ऊपर, जो 3 बजे है, बट कल का अगर आरंभ का सेशन रहेगा तो वो लेट इवनिंग हम करेंगे। वी विल अरेंज इट एट late evening. So all the best for you. And one more thing, just give me 1 second. I'm sharing a feedback link into the chat box. मैं feedback link एक chat box में share कर रहा हूँ. Definitely fill the feedback form
Thanks It's for a watching. protocol, Do like, share, and and subscribe to our we will YouTube meet channel. tomorrow. We will And meet don't you again. forget to click the bell icon. #स्किल से करियर तक हम Feedback आपके link. साथ हैं.